स्वागत है आपका मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। जी हाँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इस डिस्कशन में रिवाइज कीजिए 6.4.1 द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब यह प्रूफ हो चुका है कि डीएनए रेप्लिकेट्स dash dash. It was shown first in Escherichia coli and subsequently in higher organisms such as plants and human cell. मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन एस्टाहल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे 1958 में, उसको बताइए। फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। सेकेंड पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। चलिए, हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन कौन है? उन्होंने ग्रीव किया एस्चेरिया कोलाई को इन अ मीडियम कंटेनिंग डैश डैश as the only nitrogen source for many generations. The results, the that dash dash was incorporated with newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compounds. This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal dash dash centrifugation in a dash dash density gradient. Please note that dash dash is not a radioactive isotope and it can be separated from dash dash only based on densities. Second, रिवाइज कीजिए। Then they transferred the cells into a medium with normal dash dash and took samples at various definite time intervals as the cells multiplied and extracted the dash dash that remained as double dash dash helixes. The various samples were separated independently on dash dash gradients to measure the densities of DNA. Figure 6.7. फिगर 6.7 का माइंड कैप्चर कीजिए और 10 बार बनाकर दिखाइए, या तब तक बनाइए जब तक ये फिगर और इसके डायग्राम और इसके लेबलिंग आपको बिना देखे याद ना हो जाए। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एंड थिंक वाई ए मॉलिक्यूल विद हायर मास या डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर? The results are shown in figure 6.7. ये बताइए, फिगर 6.7 क्या दिखाना चाहता है? किसके एक्सपेरिमेंट को दिखाना चाहता है? चलिए बताइए, मेसेल्सन एंड एस्टेहॉस एक्सपेरिमेंट का थर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी। Thus, the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from dash dash medium, that is after dash dash minute Escherichia coli divides in dash dash minutes, had a hybrid or intermediate density. DNA जो कि extracted from the culture
another generation, जी हाँ, another generation के बाद, that is after dash dash minute, second generation was composed of equal amounts of this dash dash DNA and of dash dash DNA. If Escherichia coli was allowed to grow for dash dash minutes, then what would be the proportions of the dash dash and dash dash DNA molecule? Very similar experiments involving use of dash dash to detect distribution of newly synthesized dash dash in a the chromosomes was performed on dash dash by dash dash in 1958. The experiments proved Yaki DNA in chromosome also dash dash. रिवाइज कीजिए 6.4.2 द मशीनरी एंड द एंजाइम्स। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस डिस्कशन में।